So thank you so much for joining today's SME Street Future Ready webinar, which is the first of its webinar of this season. We will have this Future Ready webinar series will have 2 webinars in a month, moving on. And idea is to raise issues and topics which are related to the SME in the MSME sector. And today we are very much fortunate to have this wonderful group of small group, but really important group of people who are thinkers and doers. So this is the combination of this small group that in this forum which is focused on the revival roadmap for struggling MSMEs or the sick MSMEs, which most of the people would call it. So we are fortunate to have Mrs. Krishna Vini Kannan, who is an entrepreneur herself and representative and basically the voice of women entrepreneurs across India. And pan India wide, she has got coverage in terms of her connects, her organizations connect, and she has also done wonderful work on the revival roadmap for sick units, which is a very critical subject. We will talk about that later. We are also excited to have Dr. Raj Vakil, who is an entrepreneur, thinker, and a very very seasoned mind in this space of MSME development. And his forte is not just MSME development from one aspect, but he covers a vast plethora of activities. So I would like to welcome Dr. Raj, and also we have Dr. Subir Paul, who is the chairperson of Indian Chamber of Commerce for SC/ST and women entrepreneurs. Mr. Paul is doing phenomenal work in the area of entrepreneurship in these societies, in these areas which actually deserves a lot of knowledge support, a lot of the policy influence, and he is doing phenomenal work. So thank you so much, gentlemen, ladies, in joining SME Street's Future Ready webinar on this subject of revival roadmap for struggling SMEs. With this, I would, like to go straight to Mrs. Kannan, and touch upon her perspective on the revival, because she has done a report also. So I would like to know from her about the revival and rehabilitation of sick companies, sick MSMEs. So what is the status? How the policy is supposed to be influenced, or how the policy is actually helping the sick units? Hello, good evening all. Nice to be part of this forum. So earlier we have worked on revival and redressal forum of BJP, being Tamil Nadu president of BJP revival and redressal unit. We have worked on a cluster like Tiruchirappalli engineering cluster, where almost it is a livelihood of more than 25,000 families. It is a part of government. It had 1,000 crore turnover to, it has come back to 600 crores. We have made an appeal to the, then 2019, we have made a detailed study by visiting field visit, understanding the cluster, what is the thing. We have given a white paper presentation directly to Nitinji, then MSME minister. We invited him to Chennai. We gave a presentation of tree cluster white paper. What is the exact problem faced by those engineering clusters, and how it can be revived, how it can be supported.
Then they asked us an appeal to government. So we prepared an appeal. We went to the ministry and it was taken care. And some 10 crore grant was also given by the government. And we have been extremely supported by the ministry at that time. Dr. Raj is also part of the forum. And he was the vice president of that forum. And we had an excellent leader. She's not with us. Mrs. Rupa Rai, who was the president at that time, she was also under her guidance. We did extremely well. Then that forum is not active. We did not stop our activities. By part of being Womanawator, we mentored and made lot of MSMEs, women entrepreneurship. So now, when you ask about how this can be taken forward, government of in being an to the scope of independent director, government has their own from the company law itself. We have lot of provisions for revival and restructuring of the companies, which I would like to give a highlight of that, if that is the scope of this meeting today. Yeah. Hello, your thing is in mute, I think. Mr. Faiz, your Yeah. yeah. So, ma'am, thank you so much for this introduction, and I would like to know from you about when an MSME comes to you, or maybe you come across to any MSME, what are the possible revival plan for that MSME which actually which deserve to have such suggestions when the MSME struggle is going on? What could be See, the early signs of when it comes to MSME broadly, yes? there are a lot of subsidies and plans which is supported by government. We should make them aware of what are the how much they will be able to avail the facilities like secured and secured loans and MSME subsidies, all that. Mhm. Making them aware of the existing, then the common facilities centers like cluster formation. Hmm. Government is supporting up to 80% subsidies. We should make them, the MSME, aware of all the existing subsidies and existing schemes of MSME. That will be the first step. The next step will be case-to-case basis. Hmm. A case-to-case basis in what industry they are, where they are suffering. Hmm. It can be, we can give them guidance in terms of mentorship, or in terms of financial advice, or some skill development training, or marketing support. So it is case-to-case basis. It cannot be generalized. Hmm. So Hmm. it depends on MSMEs where they are lacking, and we have to. But generally, for revival and rehabilitation of sick companies, our government chapter in Companies Act chapter X1X, that is 24, Hmm. section 253 to 269 clearly chart out all the things what has to be done. If a thing has to, if an MSME or if a company, first of all, this is not only for industries. It should be very Hmm. clear. It is not only for manufacturing industries. Hmm. This sickness is for any company which is suffering. Hmm. Exactly. Maybe even service sector or manufacturing sectors. It is not only for Hmm. single sector. Hmm. So this is the provision of revival and rehabilitation apply to all companies, not only to an industrial company. This is point number one. Hmm. The applicant shall make an application within 60 days of determination, and all measures will be adopted by tribunal within 16 days, Hmm. 60 days, where the tribunal has to determine whether the company is sick or not. Okay. For that, the tribunal will appoint a person, a panel from the panel from central government. They will appoint an interim administrator. The tribunal will appoint an interim administrator from the panel of central government, empaneled people. So Hmm. this then the every action goes to, they are given powers by the tribunal to act on the basis of company. And once they interim administrator, either they have to say it is worth of revival or for winding up. If they are recommending for revival, then the next step follows.
They have to go and have a meeting. They will have the full control over the management. They will make a credit as a scheme of team of 7 members. They will choose the chairman. They will make a scheme and represent to central government. That will be taken care and that will be executed. So this scheme of revival and rehabilitation is under 261. So what are the things it can be done is the financial reconstruction of a sick company, proper management of the sick company by any change, either by taking over or management of such company, or by amalgamation of the sick company with any other company, or any other company with the sick company, or takeover of the sick company by a solvent company, or sale or release of part of whole of any asset or business of the sick company, and the rationalization of managerial personnel supervised in accordance with the law, and all preventive measures that has to be taken, then repayment and rescheduling or restructuring of the debts or obligation of sick company, and all such incidental and all these measures as may be necessary by everything will be decided by the interim administrator. This is how according government is supporting a lot. This is what I wanted to tell you. Wonderful. We have to, if we are working through any forum like SMEstreet or any other forum, we should be a bridge between the company and the government policy makers and the government policy itself. Make them aware of all the existing policies and support them. We should be a catalyst in making it happen. That's what we can play as a. Yeah, absolutely. With your expertise, and this is what is the actual purpose of having such initiative, to have inputs and your expertise, and deliver the kind of much needed support to the MSME sector. So I would now come to Mr. Subir Paul, who is actually well connected with the on ground entrepreneur group from SCST and women entrepreneurs. So I would like to know, sir, from you that how do you see financial restructuring as a solution for stressed SMEs? And what is your experience, first of all? How do you come across with business owners who are in the process of either getting into stress, or they are thinking of coming back to proper business? What kind of suggestions, what kind of advice you give to such business owners? So you are on mute, if you can just unmute. Yes. देखिए कोई किसी भी किसी को आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी बात है बैंकों का योगदान बहुत जरूरी है, क्योंकि एमएसएमई में सबसे बड़ा जो हम लोग रीड की एक्टिव होती है उसका फिनेंस होता है, मार्केटिंग। अगर फिनेंस और मार्केटिंग का अगर उसको सुविधा मिल जाए तो वो बहुत आगे निकल सकते। सबसे बड़ी बात ये होती है बैंकों को बहुत एडवांस होना पड़ेगा, और खास करके अगर हम एससी को देखें, एससी के लिए को आगे बढ़ाने के लिए बैंकों को मोटिवेशन कैंपेन करना पड़ता है और करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं देखता हूँ कि मैं ग्रासरूट लेवल पे काम कर रहा हूँ, और खास करके नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी करता हूँ, सिलेक्ट एरिया में भी करता हूँ। अभी मैक्सिमम में आप देखेंगे कि ट्राइबल को हमेशा डिवाइड किया जाता है, ट्राइबल को हमेशा आगे बढ़ने के लिए उनको रोका जाता है। उनको रोकने का मतलब ये नहीं डायरेक्टली रोकते, इनडायरेक्टली रोकते हैं कि ट्राइबल को आगे मोटिवेट, ट्राइबल आगे नहीं बढ़ सकती, ट्राइबल एक बन नहीं सकती। क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं उड़ीसा का एग्जांपल देता हूँ, बिलोंग टू उड़ीसा। तो होता क्या है कि जैसे आप मान लीजिए सिंपल सा स्कीम है कि पकड़ लीजिए नेशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, कि भाई आप अगर 10 लाख तक आप अगर लोन लेते हैं तो आप कलेक्शन फ्री रहते हैं। तो अभी किसी भी ट्राइबल अगर अगर अप्लाई करते हैं, अगर मान लीजिए वो काम कर भी रहा या नहीं भी कर रहा, या वो मान लीजिए प्रेशर है, तो उनको वो जो बैंकों के पास जाते हैं तो बैंक उनको डरा देते, ऐसा डरा देते, तो उनको मोटिवेट करने की जगह डीमोटिवेट करते हैं कि भाई आप कूद जा रहे हो इसके चक्कर में, आप तो डूब जाओगे, आपका पैसा ये हो जाएगा।
सबसे बड़ी बात ये होता है कि साहब एक बात तो तय है कि हमारे देश के ट्राइबल, हमारे देश के ओरिजिनल नागरिक, ओरिजिनल सिटीजन है कि ट्राइबल कहीं भागते नहीं। ट्राइबल जहाँ जन्म लेते वही मरते हैं, वही उनका मृत्यु होता है। भले हमारे ऊपर भरोसा ना करके हम भाग जाएंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स तो भाग गए इंडिया से पैसा लेके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम अगर एक एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाएंगे, अगर बिजनेस को प्रमोट करना चाहेंगे, तो सबसे पहले बैंकों का रोल एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, टोटली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि भाई आपसे वो अगर 2 लाख की मांग रहा है तो किस लिए मांग रहा है, आप देखो उसको, आप उनको एनकरेज क्यों नहीं करते हो। सबसे बड़ी बात है, हम अगर एमएसएमई को आगे बढ़ाने चाहते हैं, अगर मान लीजिए हम एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाने चाहते हैं, सबसे पहले हमको SC/ST एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्पेशल हमें स्पेशल मोटिवेशन कैंपेन करना पड़ेगा। अगर हम कैंपेन नहीं करते हैं तो उनको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, आप बताइए। मैं एज ए एसोसिएशन हिसाब से इतना फाइट करता हूँ। आप देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कितने स्कीम्स निकाले, कितने स्कीम्स निकाले, किनके लिए निकाले, सभी इन्हीं लोगों के लिए निकाले, SC/ST के लिए निकाले, ओबीसी के लिए निकाले। और लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करने का जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर दिया गया, इनको फाइनेंस करने का जिम्मेदारी बैंकों के ऊपर दिया गया। अगर मान लीजिए इनको डीमोटिवेट किया जा रहा है, तो आप सोचिए आज के डेट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम क्रिएट कौन कर रहा है, एमएसएमई यूनिटी कर रहा है। अगर एक यूनिट बना रहा हूँ, मैं 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का ताकत रखता हूँ। अगर मैं मुझे अगर डीमोटिवेट कर दे, मैं अगर यूनिट बना नहीं पाऊंगा, तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी नहीं हो पाएगा। पहला बात। सेकेंड बात, मैं एक एंटरप्रेन्योर होने से बेहतर मैं नौकरी करना चाहूंगा, मैं नौकरी करना पाने के लिए मैं ये करता हूँ। हम लोग इतने मैंने फेस करते, हमारे प्राइवेट लोग इतने फेस करते कि बैंकों का रोल में हमें बहुत डाउट लगता, बहुत ज्यादा डाउट। मैंने इस बारे में काफी खुल के लड़ा। आप मेरा ट्विटर अकाउंट खोल के देखिए, मैंने बैंकों को मैंने डायरेक्टली मैंने लिखा, और मैं ये मोदी जी को मैंने टैग करके रखा है कि भाई बैंकों का रोल जहाँ पे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वहाँ पे बैंक बहुत मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सबसे बड़ी बात। सेकेंड बात है सीजीटीएमएससी बैंक इन लोगों को देते ही नहीं है, SC/ST लोगों के, छोटे छोटे एंटरप्राइज को देते नहीं, वो बड़े बड़े उद्योगपति के लिए देते हैं। सीजीटीएमएससी अगर देते हैं तो उसमें 75% कॉर्पोरेट को वहां से मिल जाएगा। तो उनको आप फिर आप उनसे कॉर्पोरेट क्यों मांगते हो, उनका जमीन को क्यों मांग रहे हो, आप उनको डरा क्यों रहे हैं। आप अगर मान लीजिए कि आप अगर एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप अगर मान लीजिए एमएसएमई यूनिट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि यहाँ पे एक यूनिट अच्छा हो, वहाँ पे रॉ मटेरियल का पोटेंशियलिटी है, उसका मार्केटिंग पोटेंशियलिटी है, उसका एक्सपोर्ट करने का पोटेंशियलिटी है, हर चीज अगर अवेलेबल है, तो उनको फाइनेंस आप क्यों नहीं देते हैं। तो हम इसीलिए बार बार कैंपेन करते हैं, बार बार हम लोग प्रोग्राम करते रहते हैं कि हम उसको आगे कैसे बढ़ाएं। उसको बढ़ाने के लिए बैंकों का रोल के ऊपर हमें मतलब क्वेश्चन मार्क क्यों देना पड़ता है, बैंकों के रोल को क्यों देना पड़ता है। आप मैं बता दो, मेरठ में देखिए 450 महिला एंटरप्रेन्योर से सुधीर जी उन लोग एक का चीज ये सुधीर जी एक चीज बताइए कि बैंक्स का जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स SC/ST एंटरप्रेन्योर्स, ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स, तो ये आपके लिहाज से जाहिर सी बात है वो स्क्रूटनी की जो प्रोसेस है उनकी वो काफी स्ट्रिंजेंट है। कुछ सोशल नॉर्म्स और सोशल प्रैक्टिसेस समझने की जरूरत है। दिस इज व्हाट एक्चुअली बैंकर्स को अपनी उसमें समझना चाहिए कि जो कैपिटल है, जो भी लेंडिंग का आपका वो है, वो अगर ट्राइबल्स को जा रहा है, ट्राइबल एंटरप्रेन्योर को जा रहा है, तो उसका सोशल बिहेवियर ऐसा नहीं है कि उसकी चांसेस बहुत कम होती हैं कि अगर वो शहरों में रहने वाले लोगों के तरीके से उसको देखा जाए, तो मतलब इट इज मोर सेफ टू ट्रस्ट। दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंट पॉइंट। और इसके अलावा आप जैसा कि मतलब हमको पता है कि आप काफी एक्टिव हैं इन दिल्ली एज वेल एज एट द रीजनल लेवल, एट द लोकल लेवल, ट्राइबल लेवल। उन आप छत्तीसगढ़ और ये सारी जगहों पर आप एक्टिव हैं, नॉर्थ ईस्ट छत्तीसगढ़, और जो और आंध्रा की जो रीजन्स हैं, और जो उड़ीसा। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके का डिस्कनेक्ट है एंटरप्रेन्योर्स उन जगहों पर जो काम कर रहे हैं
या जो करना चाह रहे हैं या जो बिजनेसेस डिजर्व करते हैं थोड़ा सा सपोर्ट, उनके बीच में और पॉलिसी मेकर्स के बीच में कि क्या डिस्कनेक्ट है, उसको किस तरीके से हम लोग कवर अप कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होता है कि जिस तरह सरकार एक स्कीम बना देती है, उसका नॉर्म्स बना देते, टर्म्स कंडीशन बना देती है। अगर अगर मान लीजिए आप प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स उसको कर भी लेते हैं, तो उसके लास्ट मोमेंट पे उनका जमीन को लेकर हम लोग आ जाते हैं। बैंक वाले बोलते हैं कि भाई ये जमीन आपके दादाजी का है, इसको हम मॉर्गेज कहते हैं। मॉर्गेज का सवाल कहाँ से आता है पता है ना? जब आप सीजीटीएमएस की कवरेज करेंगे, 75% सीजीटीएमएस कवरेज देंगे, आप फिर उसको मॉर्गेज के लिए क्यों कराते जम पाते? सबसे पहले सेकेंड बात है, अगर ट्राइबल को अगर आप पैसा देते, ट्राइबल को आप एक स्कीम देते, तो वो ट्राइबल ईमानदारी से उसको ईमानदारी से बेईमानी नहीं करना। आप देखते होंगे, कभी आपने सुना नहीं कोई भी ट्राइबल किसी के साथ बेईमानी किया हो। लेकिन आज आज का डेट में ऐसा, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं अभी रिसेंटली, मैं लास्ट वीक में मैं गया था नारायणपुर, छत्तीसगढ़ में। आप जानते हैं नक्सली एरिया, नारायणपुर का कलेक्टर तक मेरे सामने बोले, नारायणपुर के कलेक्टर भी मेरे सामने बोले, वो मांझी जी है, उन्होंने बोले मुझे, पाल साहब मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि भाई इन लोग को नक्सली ना बने, ये लोग अच्छे रास्ते पे चले, लेकिन इनको मदद करने वाला कोई नहीं। आप समझते 2,000 रुपए के लिए बंदूक पकड़ते, विश्वास कीजिएगा, 2,000 रुपए के लिए उसको महीना में 2,000 रुपया दिया जाता है बंदूक पकड़ने के लिए। उनको 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 एकदम, मतलब आप सोचिए, सोशल लाइफ जीने के लिए उनको मैंने एकदम इस तरह से उनको ये कर देते कि सोशल लाइफ जीने नहीं चाहता है। तो आप एक बात रखिए, इस जगह में हम क्या करते हैं कि लोग समझते नहीं, लोग सोचते हैं अरे यार सरकार हमारा ठीक है, यार मोदी जी ठीक है, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि मोदी जी के बाद भी जिसका रोल है, वो अपना रोल को अगर ईमानदारी से निभाएगा, तो ये सारा ये जो चेन सिस्टम है ना, ये चेन सिस्टम बहुत स्मूथली चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you so much. I would now like to, go to Dr. Raj. Are you there, sir? जी जी जी। So, thank you so much for, being a patient listener also in this, and we are very thankful to you for supporting this whole initiative from the knowledge perspective. And हमारे गली गली में Dr. Raj, जी जी, एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है? थोड़ा सा आवाज डिस्कनेक्ट हुई है सुबीर जी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 जी, तो हम आवाज आ रही है? जी जी, हम राज जी से एक बात पूछना चाह रहे थे। डॉक्टर राज मकबूल इज द चेयरपर्सन फॉर उदय खनिज इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी। Raj ji, I would like to know from you, how do you look at bringing MSME, in through the cooperative system? और इसमें आप मुझे बताइए कि like the revival or the sick MSMEs, what do you look at this whole situation, especially when you are actually connected to the MSMEs as well as you are also, connected to, policy influence mechanism also. तो आपसे मुझे थोड़ा सा इसके बारे में जानना है। या गुड इवनिंग ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाउ वीडियो ऑफ है, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू स्विच ऑन योर वीडियो? माय वीडियो, या इफ इट इज पॉसिबल। सर एक्चुअली अच्छा, देखिए नाउ इज इट ओके? यस यस। सो या योर क्वेश्चन इज रियली अप्रिशिएटेड, and we were discussing about government support policies and schemes for MSME. Government around the world have definitely rolled out various support schemes and policies to help MSME recover from the economic shock here in India and even in abroad also. But especially to ease their financial stress, as I am coming from a medical doctor's background,
So I would always like to go first before getting anything, diagnosed. I, we should always go for certain investigations, right? We call it like a pathological checkup or radiological checkup and all that. I believe that MSME is totally also based on all this basically management of 5M: the Hmm. money, the method, the manpower, the machinery, and the material. Hmm. And this 5M, if it is rightly connected with the 5C, the contacts, contracts, connections, communication, and above all, consciousness, then Hmm. definitely MSME can come up to the success level very, within a stipulated time, or within a, they can achieve a break even time in a very less period. This is Hmm. my first point of submission. Secondly, the, like in cooperatives, we have 30% state government share capital and state government's participation in the project costs. This 30% is given without any interest for a period of 20 years. Hmm. I will explain you that 10% is our investment, 30% is state government's investment, and 60% is the bank loan. Hmm. This is the procedure or basic schemes or which is being followed in cooperatives at the present level. Hmm. But in MSME, the schemes which are there, 25% of the project cost the entrepreneur has to invest. If I am wrong, you may please correct me. No, absolutely. Yeah. So this is one point. Second point is the rate of interest which the banks offer Hmm. to achieve a break-even point. Many times that rate of interest of 12 to 16% or 18% is not actually feasible in the initial level, which causes a lot of burden on the entrepreneur or MSME promoter. Hmm. So definitely the credit guarantee fund trust for micro and small enterprises should be there, and as well as there has to be a collateral free credit to MSME, Hmm. because many times it happens that the entrepreneur is really a very good intellectual, is having a very good idea coming, he can do a lot of basic things, but many times there is not a proper combination of Saraswati and Lakshmi. Hmm. Hmm. Okay, so this is my second point. So Hmm. this scheme of this credit guarantee schemes trust for micro and small enterprises, this scheme provides collateral free credit to MSME, helping them access funds without the need of a large assets as security. The scheme has been a game changer, especially for the smaller MSME Hmm. that struggle to access traditional bank loans. Hmm. Impact: since 2020, the CGTMSE has supported over 4 lakhs crores in loans, Hmm. benefiting nearly 2 million MSME. Hmm. Secondly, the Emergency Credit Line Guarantee Scheme, launched during the pandemic, offers collateral-free loans to the MSMEs affected by COVID-19 disruption. The scheme has been instrumental in providing Hmm. liquidity to MSME, particularly in sectors such as hospitality, tourism, and retail. Hmm. Impact: by the end of the 2023, over 3.5 lakh crores have been disbursed to MSME under the ECLGS, helping prevent large-scale business closures. Production link incentives Hmm. targeting specific sectors such as electronic, textile, and pharmaceutical. Hmm. The PLI schemes incentives MSME to increase production capacity by offering subsidies based on output. Hmm. The scheme has been extended to other sectors in 2024 to further drive MSME growth. Impact: MSME in these sectors have seen an average increase of 10 to 15% in production output since the scheme implementation. Hmm. Next is insolvency and bankruptcy code reforms. Yes. The Indian government has introduced pre-packaged insolvency resolution under the IBC framework, especially for MSME. This allows struggling MSMEs to restructure their debits outside the traditional court process, providing a quicker and more efficient path to revival. Impact: over 200 MSMEs have been already benefited from the pre-packaged insolvency resolution since the reform's introduction. Hmm.
Next one is the role of turnaround specialists and consultants, strategic intervention. The involvement of turnaround specialists and management consultant is often essential to a successful MSME. These experts bring a fresh perspective, identifying inefficiency that business owners may overlook. Also, certain case studies of MSME that successfully turned around by following strategic intervention. We will share it afterwards. Operational efficiency audit consultants can conduct comprehensive audits of the operation, identifying areas where cost can be cut and productivity improved. Digital transformation, implementation, digital tools, and automation in operation can significantly reduce cost and increase. It has been highlighted example of manufacturing MSME. So these are my points which I wanted to convey. Absolutely. And there is also a point that production cost by 20% by automating certain processes can be reduced. Market realignment turnaround specialists can help business reposition their products or services to the better align with market demands. In many cases, introducing new products lines or entering untapped market has revived struggling businesses. Thank you. Thank you so much, Dr. Raj, for these very, insightful, valuable inputs. Subir Dada was saying something when we lost his voice. Dada, are you there? Yeah, Subir Dada, please continue. हाँ बोलिए बोलिए जी दादा आप बहुत इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट बोल रहे थे बट समहाउ वी लॉस्ट द वॉइस उस वक्त जी जी तो मैं उसी लिहाज से बोल रहा था कि सरकार तो स्कीम जारी करती जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो नीचे स्तर के अधिकारी होते हैं जी उनके उनके इच्छा शक्ति का कमी की वजह से वो स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। मैं इसके बारे में काफी बार मैंने सरकार को लिखा भी, सरकार इसके ऊपर स्टेप भी लिए थे। मैं बताना चाहूंगा, लास्ट ईयर हमने सबसे पहला प्रोग्राम हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी में किया था, उसके बाद गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट में किया था। तो तब सरकार हरकत में आई, बोले हम 15 साल से हम कश्मीर में प्रोग्राम नहीं कर पाए, कश्मीर में जो सिचुएशन चल रहा था। तो मैंने बोल दिया साहब कश्मीर का सिचुएशन तो खत्म हो गया, सरकार ने खत्म कर दिया, अब हमें डर किस बात की? हम तो लोगों को जागरूक करने गए, हमें तो लड़ाई लड़ना नहीं है, हम तो जागरूक करने, हम सोशली गए। तो काफी सपोर्ट भी मिला था। उसके बाद से हमारा कार्यक्रम इतना अच्छा बढ़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया में आम एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि उसमें बैंकों का रोल को लेके काफी लोगों के अंदर काफी मतलब एक मायूसी है, बहुत बड़ा मायूसी है। अगर मान लीजिए सारे नॉर्म्स पूरा कर भी लेते हैं, उसके बाद भी बैंक उनको कुछ ना कुछ बहाना करके उनको पीछे कर देते हैं। नहीं ये बहुत बड़ा मतलब माने शर्म की बात है कि हमारा सरकार का पैसा है, लेकिन बैंक वाले ऐसा करके उनके साथ में हरकत करते हैं, और कुछ नीचे स्तर के अधिकारी भी ऐसा हरकत करते हैं, जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योर्स आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैं सरकार को ये नहीं करूंगा, मैं दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि सरकार का काम है योजना बनाना, योजना बना के स्टेट में पहुंचाना। लेकिन स्टेट में पहुंचाने के बाद स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, और स्टेट गवर्नमेंट में कार्यरत जो जितने भी अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है इसको इम्प्लीमेंट करे। लेकिन वो अगर उनके अगर विल पावर नहीं होगा तो कहाँ से करेगा बताइए? इसको लेके काफी मतलब ये चल रहा है। अब खास करके हम नक्सल अफेक्टेड एरिया में भी प्रॉब्लम है। अभी जैसे आसाम में आप देखिए, जो बोडोलैंड के बारे में बता रहे, अभी मैं गया था कोकराझार में आप जानते हैं उल्फा उग्रवादी है, लेकिन आप देखिए वो उल्फा उग्रवादी अभी वहां पे नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर। और जितने भी है वो रिहेबिलिट हो के आप आ रहे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं काम करने के लिए, उनको काम दिया जाए। लेकिन बैंकों का रोल को लेके मुझे इतना बुरा लगता है
कि माने उनको आगे बढ़ने के लिए आप क्यों नहीं दे रहे हो? जी पहले बताइए ना। जब बिल्कुल। जब मोदी जी ने वहां से जारी कर दिया, सेंट्रल से इतना फंड चले जाएगा, फंड आ गया आपके स्टेट में, तो आप कौन होते रोकने वाले उसको? तो यही चीज को लेके आज देखिए एंटरप्रेन्योर्स आगे नहीं बढ़ने के कारण भी यही बात है कि छोटे स्तर के अधिकारी और बैंकों का रोल के ऊपर में माने इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जा रहा है कि वो आगे बढ़ने के लिए हमको देते नहीं है। तो कहाँ से आप बताएंगे कि हम ट्राइबल को आगे बढ़ा रहे हैं, हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं? कैसे आप बोल सकते हैं, बताइए। सुबीर दादा, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। और ये बैंक ब्रांच लेवल पर ये एक्सपीरियंस फेस करते हैं बिजनेस ओनर, छोटे बिल्कुल बिल्कुल एंटरप्रेन्योर। जी। और यही ये छोटे एंटरप्रेन्योर हम अभी यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं, लेकिन ये मोटिवेशन और ये सपोर्ट 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए के अगर लोन के तौर पे 10-10 लाख, तो वो बहुत बड़ा फिगर। और इंडिया के लिए, भारत के लिए एक ये एक सनराइज सेक्टर जो है वो सही मायनों में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊं, क्योंकि हमारे बीच इस वक्त कोई बैंकर नहीं है, तो फ्रॉम द अदर साइड, फ्रॉम फ्रॉम डेविल्स एडवोकेट काइंड ऑफ थिंग, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक पर्सपेक्टिव है जो बैंकर्स का पर्सपेक्टिव है, वो मैंने भी कई बार जो भी बात की है, तो एक उनका पर्सपेक्टिव मैं यहाँ जरूर रखूं कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दे डील विद पब्लिक मनी। अगर एनपीएस होते हैं, ज्यादा एनपीएस होते हैं, तो उसमें उनको अल्टीमेटली पब्लिक विल क्वेश्चन ऑन दैट, नंबर वन। नंबर टू, बैंकर्स का पर्सपेक्टिव ये भी है कि कई बार जो एप्लीकेशंस आती हैं, कई बार जो बिजनेस ओनर्स आते हैं उनसे लोन लेने के लिए, वो एप्लीकेशंस उतनी मतलब उसके ऊपर उतना होमवर्क नहीं किया होता है कि वो क्वालिफाई कर जाएं। तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग, और कहीं ना कहीं वहां पे हम, मतलब आपकी मैम की ऑर्गेनाइजेशन और इस तरीके के इंटरमीडिएटरीज की भी के रोल का भी स्कोप बनता है, जो कि हेल्प करें बिजनेस ओनर्स को ये समझने के लिए कि बैंकर उनको किस तरह से देखना चाहता है। तो ये है। और जाहिर सी बात है, एक और जो मुझे ऑपरेशनल इशू लगता है ऑन दिस सब्जेक्ट, कि ब्रांच मैनेजर में जो मतलब ब्रांच में जो स्ट्रगल होता है बिजनेस ओनर का, दैट इज कॉजिंग बिग हिकअप। वो ये भी होता है कि जो ब्रांच मैनेजर है या जो मैनेजर है, उसको कहीं ना कहीं रिस्क कैपिटल नहीं दिया जाता है, ऐसा मुझे लगता है। रिस्क कैपिटल एक ऐसा कैपिटल हो सकता है जो कि एलोकेट किया जाए फॉर माइक्रो लोन्स, फॉर एमएसएमईज, फॉर दोज काइंड ऑफ रिस्क ओरिएंटेड लेंडिंग। वो कैपिटल अगर ब्रांच तक के पहुंचे ठीक से, क्योंकि policy level पर at top level, we have visionary leaders, we have leaders who are talking about fund allocation for MSME development. लेकिन अल्टीमेटली ग्राउंड लेवल पर जाते जाते ब्रांच मैनेजर लेवल पर या मतलब मैनेजर लेवल पर जो लोन सैंक्शन करते हैं, उनको कहता है कि व्हाट विल हैपन इफ माय लेंडर गोज समवेयर, एंड हाउ द रिकवरी हैपन। तो वहां पे ब्रांच लेवल पर, बैंकर्स लेवल पर ये कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, ये गाइडलाइन होना जरूरी है कि देयर इज अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ दिस कैपिटल व्हिच यू कैन यूटिलाइज फॉर एमएसएमई। मेरे ख्याल से अगर ये चीज हो जाती है तो बहुत हद तक के बेहतर होगा। और बाकी तो thank you so much. I think in the interest of time, we have to conclude this. I Yeah. would just like to mention one thing here, uh, that SME Street as a platform is focused on this subject, and we keep on doing activities like this. Um, so the road to revival for struggling or sick MSMEs is a challenging task, but it is achievable. So early detection of financial or operational challenges or distress um, is something which is strategic, which are strategic interventions, which can be solved through things like debt restructuring, financial planning, and expert consulting. So organizations like ours can be
used or explored for this kind of, thing. Secondly, I would also like to mention that revival of MSMEs is not just a financial, it's not only about financial support. It's a strategic evolution. It should start from the top and should have a very strong, last mile, which should be as, as what Sudhir has just mentioned, that it could be a challenge at the branch level, while at the top level, things are looking very much supportive and policies are much more favorable. But वो सब कुछ रिफ्लेक्ट करना चाहिए at the ground level. So, with this, we at SME Street we are committed and continue to empower the MSME sectors. And definitely for the revival of MSMEs, it's a very important subject at the policy level, at the on-ground growth level, which, a lot of tools, a lot of resources, knowledge is one of the most important thing which is needed. With this, I would like to thank Dr. Raj, Subir Pal Saab, and Mrs. Kannan for coming and for taking part in this webinar. And I would definitely like to have continued support from your side in order to deliver the much needed knowledge for the MSME sector. Thank you so much.